and I'm Vaishali Kohli. Now today, January 15, 2026, Mumbai is voting in full force for its 227 wards, deciding the future of the country's richest civic body, with an annual budget exceeding 74,000 crore, larger than many Indian states. Polling is underway from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. and with over 1.03 crore eligible voters and around 1,700 candidates in the fray. Every vote counts towards electing the next set of corporators who will shape Mumbai's infrastructure, sanitation, roads, water supply and development. This is a high-stakes battle for control of the BMC, pitting the BJP-led Mahayuti alliance, BJP's Eknath Shinde's Shiv Sena and Ajit Pawar-led NCP against the united Thackeray brothers front. Shiv Sena, led by Uddhav Thackeray, and Maharashtra Navnirman Sena, led by Raj Thackeray, in a rare family reunion aimed at reclaiming Marathi pride and Mumbai's legacy. The fight is intense, with promises ranging from women's welfare schemes, Marathi Manus empowerment, best bus concessions, property tax reliefs and pledges to make Mumbai a world-class, pothole-free, corruption-free metropolis. With that, let's take a look at what you must do before you go to vote to make it a smooth, uninterrupted experience. All right, viewers. So, I do have, all right, viewers. So, now we're going to go across to this and show you. Now, this is the BMC elections that we're talking about, viewers, and what voters must do. Now, verify your name, and that is on the voters list. Only those listed on the final electoral roll can vote. So the first step is, of course, is to verify your name. Now, let's move on to the next step. Know the exact polling booth address in advance to avoid confusion amid traffic curbs and heavy police presence. That is step number 2. Now, step number 3, let's talk about that. Carry a valid photo ID proof. Original document, required copies will not be accepted. That is the third step, of course, carrying a valid photo ID. Let's move on to the 5th step. Now, bring your voter slip, information slip. It speeds up queue verification and booth location by polling staff. This is an important step, of course, where you need your voter slip. Now, plan your travel and timing. Polling is from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. Account for heavy traffic diversions. Of course, we're talking about Mumbai and traffic is a concern there. Now, carry party symbols, badges, scarves, flags. What voters must not do, viewers? You should not carry party symbols, badges, scarves, flags, campaign material, or any election-related items and flammable items or sharp objects. So, this is something you must not carry. So, we've given you an overview, viewers, and we've explained to you what you really must do before you go to vote. I have Medha Shiran joining me with more details. Medha, what more can you tell us? Vaishali, of course, voting has begun for the Maharashtra civic polls today, and it's a high-stakes battle, of course. In this, one critical point is that this election is seen as a chance for the Thackeray brothers, who have reunited in its backdrop after 20 years to reclaim their heritage as heirs of Bal Thackeray and ensure the political survival. It is also being seen as an opportunity for them to claim the prestige of the undivided Shiv Sena, which has run
the Mumbai civic body, as many have said, in the city for decades. And now, the counting of voting of the votes will obviously be taking place tomorrow, that is January the 16th. Now, I would like to come to the key preparations that voters should be completing before they head out to cast their vote in today's BMC elections for a smooth, hassle-free experience. Of course, the first thing that the voters need to do is verify their name on the voter list, and only those who are listed on the final electoral roll can vote. They are advised to immediately check via the Maharashtra State Election Commission portal, search by their name, their number, and other details, select Mumbai city or suburban districts and assembly constituency, as well as they also need to locate their assigned polling booth, and they should be knowing the exact address, including the building and room number, in advance, in order to avoid any sort of confusion amid traffic curbs and heavy police presence in light of these polls. They should also be using some of the portals and apps, such as the National Voters Service Portal or the Voter Helpline app, or the Mahasec Voters List.in, in order to check where they need to vote first in regards to this election. They also, apart from all of this, need to carry a valid photo identity proof, which is mandatory for identity verification, which obviously includes the voter ID card. And alternatives are also there, such as the Aadhaar card or your PAN card, your passport, your driving license as well, a Manrega job card, or any other accepted government issue photo identity cards. And additionally, one more critical point is that original documents are required and not copies, as they will not be accepted. Apart from that, polling is obviously, as you have mentioned repeatedly, from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. and people need to account for heavy traffic, diversions, barricades, and over the massive police presence that is there. There are over 28,000 police personnel who have been deployed, and more so, especially in the critical areas as well. And mobile phones, cameras, electronic devices are some of the items that people are not allowed to carry. Party symbols, badges, scarves, flags, any sort of campaign material or any election-related items are also not allowed. In regards to that, inflammable items as well as sharp objects are also not allowed. Back to you, Vaishali. All right, Meena, thanks for joining me. Now, the Brihanmumbai Municipal Corporation election 2026 is an election of members to the Brihanmumbai Municipal Corporation, which governs Greater Mumbai, the second largest metropolis in India. The election will take place on 15 January 2026 and the counting will take place on 16th January 2026. Polling will begin at 7:30 a.m. and conclude at 5:30 p.m. on January 15. A total of 34.8 million eligible voters will decide the fate of 15,931 candidates across the state. So what exactly is the BMC? Now, the Brihanmumbai Municipal Corporation, also known as the Municipal Corporation of Greater Mumbai, is the civic governing body responsible for Mumbai, India's financial capital and largest city. Established in 1888 under the Bombay Municipal Corporation Act, it is India's richest and largest municipal corporation, managing an annual budget that often exceeds that of several smaller Indian states. BMC handles key civic services for Greater Mumbai, including water supply and sanitation, waste management and garbage collection, public health, primary education, roads, bridges and infrastructure, property tax collection, urban planning and development, fire services, birth and death registration. It is headed by an elected mayor and an executive municipal commissioner. The corporation operates through elected corporators and councillors who represent local wards and form the decision-making house. Mumbai is divided into 24 administrative wards
each administrative ward is further subdivided into smaller electoral wards for which corporators are elected. There are 227 of these electoral wards. Out of these, 113 fall under the general category, while 114 are reserved for women, including women belonging to the scheduled castes, the scheduled tribes, and the backward classes of citizens. Once elected, the corporators represent the ward in the BMC House. The last civic polls were held in February 2017. The 5-year term of the corporators ended on March 7, 2022. Since then, the BMC has been administered by a Maharashtra government appointed administrator. Now, coming to how the winners are decided, the system is first past the post. In each of the 227 electoral wards, the candidate who receives the highest number of votes, even if not a majority, wins a seat and becomes the corporator for that ward. To form a majority and elect the mayor of Mumbai, a party or alliance needs at least 114 seats. I have now joining me Atul Bhatkalkar, BJP MLA from Maharashtra. Now, Mr. Bhatkalkar, a big day in Maharashtra. What would you like to say? It is a big day in Maharashtra because after 5 years, 4 years, elections are being held. 29 corporation voting take place in 29 corporations, and initial reports suggest that there is a lot of enthusiasm among the people. There is a long queue at every polling center, and I hope at the end of the day democracy will win and people will get their elected representative in local self-government. Okay, now the BJP has positioned itself strongly in the civic polls. So how do you see your party's strategy and preparedness in key Mumbai wards compared to your opponents? We are fully prepared, and so that's why we face election very strongly. We campaign our enthusiastically. We campaign each and every ward, every nook and corner of the Mumbai city, and I hope that people will give mandate in our favor. All right. Now, Mr. Bhatkalkar, the point is that, opposition parties are accusing political players of offering inducements and freebies. Is BJP distancing itself from such tactics? See, BJP never indulge in such a type of illegal things. This is the habit of Congress and UBT. And for them, the biggest problem is that they are not getting the support of the people, and that's why, to call in Hindi, नाचते अंगन टेढ़ा इस प्रकार की उनकी बात है. People are firmly believe in our development agenda, and that's why even in this election also, people will support us. That is our confidence. All right, Mr. Bhatkalkar, thank you for joining me on the broadcast. And now I have Shahid Ansari joining me live from Dadar. Shahid, जो लेटेस्ट अभी हम बात कर रहे थे, अभी वोटिंग तो शुरू हो चुकी है 7:30 से, और क्या लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी देखिए, दादर इलाके में मैं मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि जो मुंबई के जितने भी पोलिंग बूथ है कमोबेश सबका जो है यही हाल है. लोग जो है सुबह सवेरे बड़ी तादाद में जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचे. हालांकि आमतौर पर जो है मुंबई में ये कहा जाता है कि लोग जो है देर से निकलते हैं, लेकिन आज जो है ना वो माहौल बहुत ही अलग हमको देखने को मिला. आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग जो है सुबह सवेरे जो है यहाँ पे पहुंचे, और बड़ी तादाद है लोगों की एक जो कि यहाँ पे वो आए और यहाँ पे इसलिए कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोग यहाँ आए. बीएमसी ने भी जो है लोगों की जो उत्साह है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह से जो है ये बनाकर रखा गया है बीएमसी के जरिए, कि ताकि यहाँ पे लोग जो है फोटो वगैरह खिंचा सकें या इस तरह से लोग जो है अपनी खुशी जो है बांट सके. जो सेल्फी का क्रेज चला है वो उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह से बीएमसी ने ये बनाया है. आपको मैं बता दूं कि मुंबई के जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ जो चुनाव आयोग के अफसरान हैं, फिर दूसरी तरफ जो है इस तरह चूंकि लोगों को अंदाजा था कि 4 साल बाद जो मियाद खत्म
खत्म होने के बाद फिर 4 साल जो रहे हैं, उस 4 साल में ये जो चुनाव हुआ है, तो उसको लेकर जो है लोगों में जो उत्साह है, ये बात तो लाजमी थी। और यही बात है कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो इंतजार कर रहे थे इस मौके का। लोग तो जो है इस मौके को जो है वोट कम बल्कि जश्न के माहौल में ज़्यादा देख रहे हैं। यही वजह है कि सुबह सवेरे ही जो है हर इलाके में जो है बड़ी तादाद में लोग नजर आए। और उसके साथ साथ जो मुंबई पुलिस की या चुनाव आयोग की जो प्लानिंग रही है, उस प्लानिंग के मुताबिक आपको जैसा कि पहले मैंने बताया कि 7:30 बजे का समय दिया गया था और 5:30 बजे तक जो है ये वोटिंग होगी। और इसके साथ साथ जो है मतगणना जो है 16 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे से जो है संबंधित केंद्रों पर शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की भी जो है पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पूरे चुनाव के लिए 43,958 कंट्रोल यूनिट और 87,916 बैलेट यूनिट मुहैया कराई गई है। अकेले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 11,349 कंट्रोल यूनिट और 22,698 बैलेट यूनिट का इंतजाम किया गया है। मुंबई महानगर पालिका का जो है कॉर्पोरेशन में सिंगल मेंबर वार्ड सिस्टम है, लेकिन कई जगहों पर जो है जो बाकी जो 28 जगह हैं वहां पे जो है मल्टी मेंबर वार्ड सिस्टम लागू है, जहां एक वार्ड में औसतन 4 सीटें हैं और इसके लिए हर वोटर को 3 से 5 वोट डालने का अधिकार है। तो मतलब कि आप ये देखिए कि ये ऐसा होगा कि जो इन इलाकों में जो लोग हैं, वोटर्स तो एक रहेगा लेकिन उसे 4-4 वोट जो है देने का हक रहेगा। तो खुशियों के साथ साथ जो लोग जो है इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ शामिल हो रहे हैं क्योंकि बीएमसी का जो चुनाव रहा है, लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्ती बरती, तब जाकर जो है ये समय मुकर्रर किया गया, समय दिया गया कि हाँ 15 जनवरी को ये चुनाव होगा। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो अब तो चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि 4 साल का इंतजार लंबा होता है और बीएमसी जो होती है, बीएमसी आम आदमी की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा बीएमसी या बुनियादी जरूरतों में जो है बीएमसी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, पानी और बाकी जिंदगी की जो जरूरियातें हैं वो जो है बीएमसी के जरिए ही पूरी की जाती है। और उसके साथ साथ जो है जो समस्याएं हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, वो बीएमसी से ही जुड़ी रहती हैं। यही वजह है कि जो लोग थे वो भी जो है एक तरह से हम कहते हैं ना कि उकता गए थे कि कब होगा चुनाव। जो मियाद खत्म हुई, उसके मियाद के खत्म होने के बाद जो कॉर्पोरेशन में जो कॉर्पोरेटर थे वो भी जो है लाचार हो गए थे। मतलब कि चुनाव नहीं हुआ तो उनके भी जो है जो मियाद थी वो मियाद खत्म हो गई, तो वो भी जो है लाचार हो गए। जो जनता की जो समस्याएं, उनके और बीएमसी के बीच में जो कॉर्पोरेटर होता है उसका बहुत अहम रोल होता है। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप समझते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको दिक्कतें कितनी होगी। जो लोग हैं जो अभी वोट देकर आए, इनसे बात करते हैं। क्या रहा है, वोट दिया आपने? हाँ दिया। वोट दिया आपने? दिया वोट? दिया वोट। क्या चाहते हैं? हाँ अभी तो सब जीतना चाहिए, अच्छा लग रहा है यहाँ बस। पहली बार ऐसा लग रहा है चुनाव जश्न जैसा है? हाँ चुनाव जश्न जैसा है। ठीक है। तो ये लोग जो है ना, लोग बहुत खुश हैं। खुश इसलिए है कि उम्मीद नहीं थी कि जो है चुनाव अब होगा, क्योंकि 4 साल का जो समय है, जो मियाद खत्म हुई थी बीएमसी की, जो उस मियाद के खत्म होने के 4 साल बाद, जो वो भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जो है ये चुनाव जो है चुनाव आयोग ने जो है इसका समय दिया। तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए जो है बहुत अहम है आज का दिन। और यही वजह, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे राज्य में 29 नगर पालिकाओं के चुनाव है और हर राज्य में सुबह सवेरे ही लोग बड़ी तादाद में जो है निकल आए। आमतौर पर आपको ग्रामीण इलाके की अगर हम छोड़ दे बात करें, मुंबई की बात करें, तो लोगों की कोशिश ये रहती है कि दोपहर के बाद पोलिंग बूथ पर नजर आए। लेकिन आज जो है जो यहाँ माहौल देखा गया है वो माहौल बेहद जो है अद्भुत है। खुशियां हैं लोगों के अंदर, जो है चुनाव को लेकर जो है जोश है, उत्साह है और उसके साथ साथ जो है खुशी है। इसको जो है चुनाव के साथ साथ अपने अधिकार के साथ साथ वो जश्न के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि सुबह से ही जो है बड़ी तादाद जो है लोगों की नजर आई। आप देखिए कि लोग जो है पोलिंग बूथ के बाहर पर्ची लेकर अपने नामों की तलाश कर रहे हैं। लोग जो है बड़े ही खुशी आ रहे हैं कि ताकि अपने वोटों का जो है इस्तेमाल, अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। मुंबई पुलिस की बात करें तो 28,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है पूरे मुंबई समेत पूरे राज्य में जो है बड़ी तादाद में, ताकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो। और चूंकि ये चुनाव जो है एक तरह से आप देख लीजिए कि जहां पे इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री या सत्ताधारी पक्ष या विपक्ष पूरी ताकत अपनी झोंक रही है कि किस तरह से जो है इस चुनाव में जो है वो जो वोटों का जो जखीरा है वो अपनी झोली में जमा करें और बीएमसी पर किसी भी तरह से कब्जा करें। ठाकरे ब्रदर्स की अगर हम बात करें, फिर उसके साथ साथ जो है मौजूदा जो सत्ताधारी पक्ष है महायुति की बात करें, हर एक की ये कोशिश रही है कि इस चुनाव में जो है वो अपने जो वोटर्स को है लुभाने के लिए हर जो है अपने किए गए कामों की जो है बात करें, उसको एक्सप्लेन करें। बीजेपी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रही है तो वहीं ठाकरे ब्रदर्स
ब्रदर्स जो है अपने किए गए कामों की बात कर रहे हैं कि इतने दिनों तक जो है बीएमसी पर वो अगर काबिज रहे तो उन्होंने क्या क्या काम किया है। ठाकरे ब्रदर्स की जो शिवाजी पार्क में मीटिंग हुई है उसमें देखिए जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की है वो मुद्दे, और बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें आप देखिए कि किस तरह से जो है कौन कौन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो तरक्याती काम है उनकी बात की है। आप देखिए कि अभी भी जो है हमारे सामने आप देखिए कि सीनियर सिटीजन है, फैमिली लेकर उनको आ रही है ताकि वो जो है अपने वोटों का इस्तेमाल कर सके। कुछ ये जो माहौल जो नज़ारा जो है ना, आपको मैं बता दूं आमतौर पर चुनाव मैंने इतने कवर किए, इतनी खुशी, इतना उत्साह, इतना उल्लास जो है मैंने सुबह सवेरे नहीं देखा। लेकिन इसमें इस चुनाव में आखिर जो बोलते हैं ना कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और लोग जो है बड़ी तादाद में निकल कर जो है अपने घरों से आ रहे हैं। कुल मिला के जो मुंबई कर है, जो मुंबई की जो जनता है वो असल में जो है बीएमसी चुनाव को लेकर उम्मीद उसकी खत्म हो गई थी कि वाकई चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन वो दिन भी खत्म हुआ और कहते हैं कि नियम से बड़ा या कोर्ट से या कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो यही वजह है कि इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती बरती तो फिर जो है ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फिर उसके बाद चुनाव आयोग को जो है ये ऐलान करना पड़ा कि भाई 15 जनवरी यानी आज के दिन जो है चुनाव है। और आज जब ये ऐलान हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि जो लोगों की भीड़ और जो खुशियां जो देखने को मिली हैं वो एक अलग ही नज़ारा है। एक लोगों की खुशियां जो दिख रही हैं, लोग तो जो है इसे जो है एक तरह से लुत्फ उठाने जैसा जो है, चुनाव से ज्यादा इसको लुत्फ उठाने के नजरिए से देख रहे हैं। वोटिंग का अपने अधिकार का तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके बातें, उनके चेहरों की जो खुशियां नजर आ रही हैं वो एक जैसे कोई जश्न में शामिल हो रहे हैं वैसी देखने को मिली है। जी शाहिद, अब जो दर्शक जानकार नहीं है बैकग्राउंड के बारे में उनके लिए थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि ये इलेक्शंस जो पहले हैं बीएमसी पोल्स, जब शिवसेना अलग हुआ था 2022 में, जब उसका स्प्लिट हुआ था और फिर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे वो अलग हो गए थे और फिर उन्होंने बाद में बीजेपी के साथ वो जुड़े। शिवसेना सबसे ज़्यादा डोमिनेट करा है इंडियाज़ रिचेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी को फॉर 25 साल, 1997 से 2022 तक। तो थोड़ा हमें बैकग्राउंड बताइए इसका। देखिए बीएमसी चुनाव पे हर सियासी पार्टी काबिज होना चाहती है। वो अलग बात है कि किसी को कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई शिवाय ठाकरे ब्रदर्स के। वजह उसकी ये है कि सबसे बड़ा देखिए, सबसे जो रिचेस्ट जो बोलते हैं ना कि माली सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ा है, 75,000 करोड़ का जो है इसका बजट रहता है। तो जाहिर सी बात है कि हर सियासी पार्टी चाहती है कि इस पर वो काबिज रहे, क्योंकि जब वो यहाँ काबिज रहेगी तो जाहिर सी बात है कि काम के साथ साथ जो है मलाई खाने का जो मौका मिलता है वो इससे कहीं और नहीं है। यही वजह है कि हर सियासी पार्टी यहाँ चाहती है। अब आपने जो जिक्र किया है, जो बात की है, देखिए ये चुनाव ऐसा रहा है जिसमें महाविकास आघाड़ी एक अलग पार्टी रही जिसमें कई पार्टियों का वो रहा है और दूसरी तरफ महायुति रही है। लेकिन हालात बदलते गए और इस चुनाव में देखिए कई चीज़ देखने को मिली है कि जो महायुति के हिस्सा रहे वो महायुति के हिस्सा इस चुनाव में नहीं रहे, जो महाविकास आघाड़ी के हिस्सा रहे वो इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के हिस्सा नहीं रहे। ज़मीनी सतह पर लोगों को लगा कि वो जो है अपनी ताकत आजमा सकते हैं और जनता के वोट वो हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने उस महाविकास आघाड़ी या महायुति का हिस्सा नहीं बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी से जो है अपना नाता तोड़ चुके हैं या महायुति से वो अपना नाता तोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो उसका हिस्सा होते हुए भी इस चुनाव में उनको लगा कि इस चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अकेले अपने दम पर। तो कोशिश की उन्होंने, चाहे वो अजीत पवार की मिसाल ले ले, चाहे महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी की मिसाल ले ले, सबकी अपनी अपनी जगह जो है अपनी अपनी सोच बरकरार है। अब आपने जिक्र किया है कि भाई बीएमसी पे देखिए लंबे समय तक जो है ठाकरे ब्रदर्स का कब्जा रहा है। फिर उसके बाद जो है ठाकरे ब्रदर्स में भी जो है देखिए फूट पड़ी। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो पहला मौका रहा है एक लंबे इंतजार के बाद, यानी राज ठाकरे ने जब पार्टी से बगावत की थी, उस पार्टी से बगावत के बाद ये पहला मौका ऐसा मिला है कि ठाकरे ब्रदर्स जो है एक साथ नजर आ रहे हैं। अब फिर इसके विपरीत थोड़ा सा चले जाइए, ठाकरे ब्रदर्स जो है जो थे शिंदे के साथ में थे, लेकिन वो पहला We're slipping into a short commercial break. We'll see you shortly.